Hello everyone, welcome to ElitesGrid, and we are back with another question on Parajumbles, which appeared in CAT 2021, and we've already given this to you. So let's start this question. Now, these are the four sentences that you have to arrange in a proper sequence so that we get a coherent paragraph. So let's start. A popular response is the exhortation to plant more trees. A popular response. When we're talking about response, it means that there has to be some stimulus. उसके ही तो reaction में कोई response आएगा. So that means this sentence cannot be the first one. क्योंकि कोई response किस चीज का response? ये तो बताओ पहले क्या चीज है, तभी तो हम उसके response उसके according होगा. You know, there's a rule that problem would come before the solution. तो पहले पता होगा क्या प्रॉब्लम है, उसके अकॉर्डिंग तो रिस्पॉन्स आएगा. सो द रिस्पॉन्स इज टू प्लांट मोर ट्रीज. अब देखते हैं किस चीज का रिस्पॉन्स है. सो दिस इज टॉकिंग अबाउट प्लांटिंग ट्रीज as a response. We don't know about what. Second, it seems all but certain that global warming will go well above 2 degrees. Quite how high, no one knows yet. Now, second one is telling us that global warming बढ़ने वाली है और 2 degrees से ज़्यादा ही temperature बढ़ जाएगा. Now, why we are talking about 2 degrees? ऐसे कोई random number नहीं है. If you remember that we in 2015 we have Paris Climate Agreement, and you know in that all the countries they came to an agreement that they will try to control the global warming up to 2 degree temperature from the pre-industrial era, and so this was an agreement. तो वो उससे related है. So now this sentence is telling us कि 2 degree से तो ज़्यादा आपका temperature बढ़ ही जाएगा. So this sentence is telling us कि global warming ज़्यादा होने वाली है. ठीक है. Third, burning them releases it. We don't know what is this them referring to. Remember that before we talk about a noun, and then only we talk about the pronoun, because pronoun refers to the noun. पहले आप noun बताओगे, उसके बाद ही तो उसके according pronoun use करोगे. अब हमें क्या पता ये them किसके लिए है और it किसके लिए है. मतलब पहले कुछ और बताना पड़ेगा, उसके बाद ही हम इस sentence को use कर सकते हैं, because otherwise we don't know what is this them and what is this it. Because them releases it, which is why the scale of forest fires in the Amazon basin last year garnered headlines. So this is talking about something is getting burned and something is getting released, but it's definitely talking about some forest fires. Then fourth, this is because, again, this is because, मतलब something has happened and you are giving the cause about, you know, that happening, कि वो क्यों हुआ. तो पहले तो वो चीज आएगी ना कि वो क्यों हुआ, उसके बाद आप उसका solution वो बताओगे कि, you know, ये इसलिए हुआ. So that means this sentence can also not be in the beginning. So this is because trees sequester carbon by absorbing carbon dioxide. So it is talking about absorbing carbon dioxide, absorption of carbon dioxide by trees. Okay, so you know, sequester would mean that they absorb it and they store it in themselves. Like, you know, trees, they sequester carbon in their leaves. So we have these four sentences up in arrange karna hai. First thing you have to see that, you know, let's just eliminate the options that cannot come in the first, because it's very easy here to know this. अब this is because first पे नहीं हो सकता, हमारे पास 4 अगर स्लॉट्स है, तो ये first पे 4 नहीं हो सकता, क्योंकि this is because कुछ और बताना पड़ेगा, तभी हम उसको this रेफर कर सकते हैं. Burning them और it, ये भी हमें नहीं पता किसको रेफर कर रहा है, तो थर्ड भी नहीं हो सकता. और फर्स्ट और सेकंड अब बचा है. फर्स्ट इज टॉकिंग अबाउट अ रिस्पॉन्स. रिस्पॉन्स विल बी, यू नो, एज अ रिएक्शन टू समथिंग. सो फर्स्ट भी नहीं हो सकता, उससे पहले कोई और बात हुई होगी ना जिसका रिस्पॉन्स हम बताएंगे. सो वी आर लेफ्ट विद ओनली ऑप्शन 2. So second sentence will be the one which will come at the first slot. So 2 will be the first sentence. Then we have another sentence which will be कि global warming हो रही है. ठीक है. So अगर हम second के बाद third लगा देंगे, them और it, अभी भी हमें रिजॉल्व नहीं है कि them और it किसको रेफर कर रहा है, इसमें क्लियर नहीं पता चलेगा. तो सेकंड के बाद यहाँ पर थर्ड तो नहीं आ सकता, क्योंकि them और it अभी भी क्लियर नहीं है. अब फर्स्ट और फोर्थ बचा है. दिस इज बिकॉज ट्रीज सिक्वेस्टर कार्बन. दिस इज बिकॉज ट्रीज, मतलब ये बता रहे ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ट्रीज एब्जॉर्ब कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड. पर अभी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने वाली है, उसके बाद मैं डायरेक्ट ऐसे बोलूं ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ट्रीज कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेते हैं. ऐसे फिर तो कम होनी चाहिए थी ना. ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है और उसके बाद में बोल दूं ट्रीज एब्जॉर्ब कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड. दिस इज जस्ट नॉट मेकिंग एनी सेंस टू बी टुगेदर. सो इवन, यू नो, वी कैन नॉट हैव
fourth also here. तो फर्स्ट ये हो सकता है, अ पॉपुलर रिस्पॉन्स इज द एक्सॉर्टेशन टू प्लांट मोर ट्रीज, मतलब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने वाली है और इसका रिस्पॉन्स ये है कि एकदम से यू विल बी मोटिवेटेड टू प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज. सो दिस इज मेकिंग सेंस बिकॉज रिस्पॉन्स जो प्लांटेशन करने का है दैट कैन बी इन इन रिस्पॉन्स टू एज अ रिएक्शन टू ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है तो आप ज्यादा प्लांट करने लग गए हो ट्री. तो ये फर्स्ट इधर आ गया है. नाउ वी जस्ट लेफ्ट विद ऑप्शन थर्ड एंड फोर्थ. अब वी विल प्लांट मोर ट्रीज. ओके, प्लांटेशन हो गई है ट्रीज की. अब दिस इज बिकॉज ट्री सिक्वेस्टर कार्बन बाय एब्सॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड. हाँ, और ये क्यों होता है हमारा रिस्पॉन्स, ये क्यों होता है? फर्स्ट यू मेंशन अ थिंग एंड देन यू टेल अबाउट द डिटेल्स ऑफ इट. तो आपने बता दिया कि हमारा रिस्पॉन्स क्या होता है. फर्स्ट वी मेंशन दैट अ थिंग एग्जिस्ट एंड देन वी टॉक अबाउट द डिटेल्स. तो हमने मेंशन कर दिया कि अब रिस्पॉन्स है कि ट्रीज को प्लांट करना है. ट्रीज को क्यों प्लांट करना है? बिकॉज दे एब्सॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, राइट. अब हमारे पास इसमें थर्ड या फोर्थ ऑप्शन नहीं बचा. अब ये फोर्थ कह रहा है बिकॉज ट्रीज एब्सॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर थर्ड लिखेंगे बर्निंग देम रिलीजेस इट. अब बर्निंग देम अगर मतलब ट्रीज को रेफर हम कर भी दे तो इट अभी भी अनक्लियर है, तो थर्ड अभी भी नहीं आ सकता. इससे पहले कोई और नाउन आएगा जिसमें देम और इट दोनों हमारे रिजॉल्व हो जाए. सो यहाँ पर तो फोर्थ ही आएगा क्योंकि इट इज दिस इज बिकॉज दिस रिस्पॉन्स, दिस इज रेफरिंग टू द रिस्पॉन्स की रिस्पॉन्स होता है ट्रीज की प्लांटेशन करो. दिस इज बिकॉज ट्रीज सिक्वेस्टर कार्बन बाय एब्सॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, एंड बर्निंग देम रिलीजेस इट. अब देखो फोर्थ के बाद जब थर्ड आएगा तो देम और इट दोनों का हमें पता चल गया किसको रेफर कर रहे हैं. देम इज रेफरिंग टू द ट्रीज and it is referring to the carbon dioxide, that burning them will release carbon dioxide because they have carbon in them. एब्जॉर्ब करके कार्बन उनके अंदर ही रहती है, तो जब आप उन्हें बर्न करोगे तो जो उनके अंदर वाली कार्बन है वो बाहर निकल जाएगी. सो बर्निंग देम इज ट्रीज हियर, रिलीजेस इट मतलब कार्बन डाइऑक्साइड. सो दिस इज मेकिंग परफेक्ट सेंस हियर. अब सारे प्रोनाउंस फिट हो गए हैं. सो आंसर इज सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ एंड थर्ड. ठीक है, और ये देखो देयर इज अ it is coherent as well. Like second is talking about global warming, it is talking about global warming, and then first is saying कि अच्छा इसका response है planting trees. Then third is telling then fourth is telling us about ki why trees because they sequester carbon dioxide, they sequester carbon. And then the third one कि अच्छा they sequester carbon मतलब कार्बन उनके अंदर है. अब अगर हमने बर्न किया उनको, burning them, if we burn them मतलब trees, burning them releases it मतलब कार्बन जो बाहर आ जाती है उनको बर्न करते हैं. दैट इज वाई फिर वो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि फॉरेस्ट फायर्स का. सो एवरीथिंग इज कनेक्टेड. ग्लोबल वार्मिंग से रिस्पॉन्स, ट्री से ट्रीज, कार्बन से कार्बन इधर. ठीक है, सो एवरीथिंग इज कोहेरेंट हियर. नाउ दिस क्वेश्चन इज ओवर. सो वी हैव अनदर क्वेश्चन फॉर यू. So in the meanwhile, you should try this question and then please give the answer in the comments. We will discuss it later on. I hope you enjoyed the video. Thanks a lot for watching.